I will tell you about what are the features of Krita, switching to animation workspace and how to create animation. Now, Krita, it is a photo editing software. With a photo editing software, it's a simple looking pictures can be enhanced to extend and if captured by an expert photographer. The word Krita comes from Swedish language. Kri means creole and Rita means to draw. It is an open source software which is designed for digital drawing, 3D, 2D animation and photo editing. Krita is interference that consists of different panels that can be docked anywhere on the screen. It helps you to change the layout of the screen according to your need. आप अपने जो स्क्रीन का लेआउट है अकॉर्डिंग टू योर नीड और कन्वीनियंस आप चेंज कर सकते हैं. और जो यूजर इंटरफेस है कृत्य का, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज. यहाँ पे आपके मेन्यूज, बटन्स एंड पैनल्स होते हैं. इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर which means that Krita software code is available for public calibration. आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं and from its official website that is krita.org. ये एक huge built-in gallery vector है which is used for drawing comic strips. Krita has a great feature, brush stabilizer, which is used to enhance smoothness. ये रहता हम brush strokes के through smoothness देते हैं. And brushes are the most important tool in the drawing. In Krita, there are total 100 different brushes colors that will give you an amazing drawing experience. These brushes are used to give different effects to the drawing. ये different effects देते हैं drawing. Now switching to animation workspace. Now in Krita, to access animation features, the easiest way is to change our workspace. And this will make animation docker appear. एंड टू ऐड एनिमेशन डॉकर आपको चूज वर्कस्पेस बटन पे जाके जो आपका वर्कस्पेस पैनल है वो डिस्प्ले हो जाएगा. आप यहाँ पे एनिमेशन ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे एंड वर्कशॉप शोन इन द फिगर. बिफोर क्रिएटिंग एनिमेशन सबसे पहले हम कंपोनेंट्स देखते हैं. व्हाट आर इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स. इट्स हैज यहाँ पे क्या है, इट हैज डिफरेंट टूल्स फॉर ड्रॉइंग. ठीक है, दिस इज चूज वर्कस्पेस बटन. दिस इज योर टूल्स फॉर मैनेजिंग लेयर्स. This is timeline. ये क्या होगी, आपकी टाइमलाइन होगी. Now first is stage. The stage is a drawing board where you can create graphic, animation and make modification. It is a large space present in the center of the workspace. The workspace is the arrangement of various elements like tool panel containing different dockers, stage, timeline and so on. Now tool panel consists of various tools to draw, paint and model. आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो, पेंट कर सकते हो और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. व्हाट आर दैट 3 पार्ट्स? दैट इज टूल बॉक्स, लेयर एंड एनिमेशन. टूल बॉक्स, दिस डॉकर हैज डिफरेंट टूल्स दैट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग, पेंटिंग एंड सेलेक्ट. लेयर ये मैनेज करता है जो भी लेयर्स हैं आपकी एनिमेशन में. देन एनिमेशन, इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल दैट आर यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग एनिमेशन. Now frames. What are frames? Animation in Krita is created with the help of frame. Each frame is divided as a little rectangular cell that appears on the timeline. Every fifth frame जो होता है वो क्या display करता है? Number that you can find on the top of the timeline. Now keyframes, ये special types of frames है where you define some changes to an object. Properties for an animation like position, color and shape. Then we have timeline. It is a rectangular window जो आपके bottom पे present होती है of the stage, and it is the area where control the sequence and timing of graphics and other elements. इसके major components हैं आपके layer, frame and playhead. Layers are like transparent sheet just stacked होके top of another, each containing different images जो आपकी stage पे होती है. Now creating an animation. If you want to create an animation in Krita, a jumping man on the road. Now create a document. You will need 2 layers to make a jumping man on the road. And another for men. To create a document in 2 ways, 2 layers. आप उस step follow करेंगे. Click on the file, new, create new document dialog box appear. Like this, एक dialog box appear होगा. And in the create new document box, add the required value. देखो width कितनी होनी चाहिए, कितनी उसकी height, क्या उसका resolution हो सकता है. ठीक है, फिर नाउ क्लिक द कंटेंट टैब. आप अपडेट करोगे कि लेयर 2 है, सेलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस. बैकग्राउंड क्वालिटी 100% होनी चाहिए. बैकग्राउंड कैनवास कलर का होना चाहिए.
After updating all required values, click on the create button. This will create new Krita document. एक new Krita document ये create कर दे. And then renaming layer. If you want to rename layer, you can also rename it. What are the steps for renaming? Now renaming, double click on the layer you want to rename. जिस भी layer को आपको rename करना है, double click करेंगे. Type a new name and press enter. आप new name enter करेंगे और न्यू नेम डालेंगे, उसमें टाइप करेंगे और एंटर की को क्लिक करेंगे. नाउ यू वांट टू ऐड एनिमेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर you start a drawing, you will on a road layer make sure you hide the other layer. The hide of the main layer, simply click on icon. इस icon पे आप क्लिक करेंगे. Now select the layer which you want to draw an object. Select any drawing tool from the toolbox and draw an image that looks similar to the one given below in the work area. जो similar दिखती है. Click on the road layer and draw horizontal line using the line tool. Now the next thing is do so at another frame in the timeline. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Add blank frame बटन पे जाना पड़ेगा and repeat the previous steps and add new frames 0, 6, 12 as point shown in figure like this. Now click on each frame and draw the images with the drawing. आप images draw करोगे frame 0, frame 6 and frame 12. Now make both the layers visible. Add the following information in animation frame. To view the animation, click on the play button. आपको अगर view करना है तो आप play button पे click करें. What are its properties? Start. First frame of the animation and last frame होता है. Play speed क्या होता है? Speed जिस पे आप क्या कर रहे हो? Preview mode पे animation को preview करते हो. Frame rate क्या होता है? Speed at which animation be played when embedded with other app. जब आपने दूसरे ऐप के साथ उसको embed कर. Right? Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.